Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Gagan ma'am is here for your help. In this video, we are going to learn rhyming words and how to form rhyme scheme. That is important for all the classes. So, what we are waiting for? Let's start. Before learning how to form the rhyme scheme, first of all, we should learn about the rhyming words, what actually the rhyming words are. Rhyming words are two or more words that have the same or similar sound. Okay, the words which are pronounced in the same way. Okay, and or having same ending sound, the words are called rhyming words. For example, goat, boat, moat, float, coat. Then next one is tire, fire, desire, liar. And I would like to add one point here. Don't worry about the spelling and don't worry about the meaning. Spelling may be different, meaning may be different, okay, but the ending sound or the pronunciation that is to be same. The words having the same ending sound are called rhyming words. One more example is here: grass, pass, mass. I hope the rhyming words are clear to you. Let's learn with the help of some poems. Here I have chosen a very beautiful poem, that is Thank You God. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Here you can see the word sweet, then eat. No doubt these two words are different, but having the same ending sound, sweet, eat. So these two are rhyming words here. In the same way, sing and then everything. Right? Once again, these two are also the rhyming words. So, sweet, eat, sing, everything. One more example is here. One more poem we have. Tree. Do not cut me, cried the tree, because I gave you rain free. In my cool shade you rest, eat my fruits that are best. Take in my fresh smell, let me live my life well. Now, identify the rhyming words. Me, tree, and free. Right? Me, tree, free. These three are rhyming words. Same, rest, best. These two are also rhyming words. Apart from that, smell, well. Okay, ये भी जो है rhyming words हैं. I would like to explain in Hindi also so that it can be easier for you to understand. ऐसे words जो same तरीके से बोले जाते हैं, ठीक है, मतलब जिनको बोलते हुए सेम साउंड जो है वो एंडिंग साउंड सेम आती है, जैसे मी, ट्री, फ्री. तो आप देखेंगे हमारे जो लिप्स है, हमारे जो मतलब मुंह है, उसकी शेप जो है वो सेम रहती है, ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. जिसको राइमिंग वर्ड समझ आ गए उसको राइमिंग स्कीम बहुत इजीली वो फॉर्म कर पाएगा. सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. नाउ, राइम स्कीम. राइमिंग स्कीम क्या होता है या फिर राइमिंग स्कीम जो है उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको ये बताऊंगी. A rhyme scheme is the ordered pattern of rhyming words at the end of each line of a poem. Difficult? No, it is very easy. The rhyme scheme or pattern can be identified by giving end words that rhyme with each other the same letter. For example, AB, AB, AAA, AABB or ABCB. Let me explain in Hindi also. राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम जो है वो एक ऐसा ऑर्डर्ड पैटर्न होता है जो कि राइमिंग वर्ड्स, पोएम की हर लाइन के एंड में जो राइमिंग वर्ड्स आते हैं उनको एक लेटर
दे के उससे बनाया जाता है। ठीक है, राइम स्कीम और पैटर्न उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय गिविंग एंड वर्ड्स, जो लास्ट वर्ड्स होते हैं दैट राइम विद ईच अदर द सेम लेटर, मतलब जो लेटर राइम्स करेंगे, जो वर्ड्स राइम करेंगे एक दूसरे के साथ, उनको हम सेम लेटर देंगे। इस तरह से जो है हम राइम स्कीम बना सकते हैं। मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों को, बट अभी एक पॉइंट की हेल्प से जब हम समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने सेम पॉइंट चूज की है। थैंक यू गॉड, लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। So the poem is, thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. So what is the first task to do? That is to underline the last word of each line. Okay? सबसे पहले आप क्या कीजिए, हर लाइन के लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। ऑलराइट, इसके बाद हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेट्स तो सबको आते ही होंगे, ए बी सी। सो फर्स्ट वर्ड का, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है हम उससे स्टार्ट करेंगे। हम इसको बना देते हैं ए। ओके, वी शैल गिव दिस लास्ट वर्ड लेटर ए। नाउ चूज ऑल द वर्ड्स दैट rhymes with God. So God, 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 all these are same, and even the rhyming words. So we shall write all the words God as A. Okay, सारे जो भी God जितनी बार भी आया है उसको हम A लिख देंगे। Then अभी हमने सब God को जो है वो A लिख दिया। अब next word that is sweet. So write down the sweet, the next letter that is B. ठीक है, B लिख दिया। अभी sweet के साथ जो rhyming word है that sweet, eat. So we shall write down eat also as B. Then sing, sing जो है वो eat के साथ rhyme नहीं कर रहा है, and think that is also not rhyming with sweet or eat. So we shall write down them as C because they are different from A and B. So now we are done with all the words. जितने भी वर्ड्स होंगे हमें सबको कंप्लीट करना है। ठीक है, जहां तक भी जाए, ए बी सी डी ई एफ वट एवर। सो अभी हमने सब लाइंस को कर लिया है। सो दैट मीन्स वी आर डन विद द राइमिंग स्कीम। सो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज A B A B A C A C. All right. So this is the rhyming scheme of this poem. Let's have one more example. The same poem. Once again, what shall we do? How shall we start? Underline the last word of each line. Okay. Uh, Let me add one point here. You can be given the task to identify the rhyme scheme for first stanza or second stanza or third one, or you can be asked to form the rhyming scheme for whole poem. ठीक है, आपको ये भी बोल सकता है कि स्टैंजा नंबर 1 की राइमिंग स्कीम बताओ, 2 की या 3 की, या फिर आपको ये भी बोल सकता है कि पूरी पोएम की बताए। मैं यहाँ आपको स्टैंजा वाइज बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम बनानी है तो आपको उसी वे में नेक्स्ट लेटर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, सो डू नॉट कट मी, स्टैंजा 1, डू नॉट कट मी शैल बी रिटन एज ए। क्राइड द ट्री, देन वंस अगेन tree, and free is also rhyming with this, so we shall write down this also as A. Then you is different, so we would write down it as B. अब देखो, अगर आपको पूरी पोएम की बनानी है तो जो शेड है हम उसको देखेंगे, क्या वो ए या बी के साथ राइम कर रहा है, तो नहीं, तो इसको हम सी लिख देंगे। फिर रेस्ट है वो फिर डिफरेंट है, उसको हम डी लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको स्टैंजा वाइज बता रही हूँ। सो फर्स्ट स्टैंजा वी आर डन विद इट, ए बी ए। So the rhyme scheme for the first stanza is A A B A. Then in the same way, second stanza, once again we are to start with A because we are forming the rhyming scheme differently. So shade would be written as A, rest would be written as B. Then fruits, is it rhyme with rest or shade? दोनों के साथ ही rhyme नहीं कर रहा है, so we would write down it as C. Then once again best, that is rhyming with rest, so we would write down it as B. So rhyming scheme for the second stanza is A B C B. Same for the third stanza. Fresh, that will be written as A. Then smell, that would be written as B. And this well rhymes with smell,
So we would write down it as B, and then we shall see the last word that is pending, that is C. Sorry, leaf is not rhyming with fresh or smell, so we would write down it as C. So the rhyming scheme for the third stanza is A, B, C, B. See, I hope it is very much clear to you all. And students, as you know, practice makes a man perfect. So I will suggest to choose some poems from your textbook and try to form the rhyming scheme. Okay. And apart from that, I will also try to upload some videos regarding the rhyming scheme of different poems class wise. Okay. For class 6, then 7, 8, 9, 10. That will be helpful for your exams also. So subscribe my channel so that you may get the notification for the video that is to be uploaded in future. Apart from that, if you have enjoyed the video, learn something new, do like the video, share it with your friends, and if you have any doubt, you can share it in the comment box. I shall try my best to answer your queries to solve your doubts. Okay, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye. See you in the next video.